नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। जो कहते हैं अंग्रेजी में द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। और आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान का जो नया निज़ाम है वो फिर से रागे कश्मीर पर वापस आ चुका है। और अगर राग कश्मीर वो आलाप रहे हैं तो क्यों ना हम चुपके से पीओके ले लें। आइए इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर शिव शास्त्री और अक्षय कपूर जी हमारे साथ हैं। स्वागत आप दोनों महानुभावों का। डॉक्टर नमस्कार संजय जी, धन्यवाद। नमस्ते अक्षय जी। डॉक्टर शिव, आपके पास कोई सिनिस्टर प्लान है? हेलो डॉक, आई थिंक इज डिसअपियर्ड। I think he's lost his connection. He says that, okay, I got a message. StreamYard has crashed once again. It's already crashed 2 or 3 times. Anyway, अक्षय जी आपसे शुरू करते हैं। तो फिर तो पाकिस्तान में तो कश्मीर राग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। व्हाट डू यू से? जी नहीं, बिल्कुल सर। इसको समझने के लिए आई थिंक हमें इसका जो मूल आधार है आई थिंक वो समझना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे को 5 मिनट देंगे, 5-10 मिनट में जी थोड़ा बिल्कुल समझा बिल्कुल दूं। बिल्कुल आराम से। देखिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे मुस्लिम हैं। तो जो एक इस्लाम का चयन करने वाले का मूल आधार ये होता है कि वो काफिरों को टोटली या तो डिस्ट्रॉय कर दें या कन्वर्ट कर दें, और ये एकदम फंडामेंटल है। नाउ ये जो चीज है उनमें, ये रिगार्डलेस ऑफ कौन सी पार्टी पावर पे है, किसने कितनी पढ़ाई की है, कौन क्या काम करता है, कोई सर्जन है या गाड़ी चलाता है, ये सब में ये बात है जो फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम है कि एक काफिर को उसका जीवन मेरे लिए एक जुल्म है और उसको चेंज करना है। दिस इज वेरी फंडामेंटल और उनको बचपन से सिखाया जाता है। उसके साथ ये जो इस्लाम का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने अपना ये जो मुल्क है वो बनाया था, उसको काफिरों से पाक करके, काफिरों को कंप्लीटली निकाल के पाक करके। उन्होंने अपने हिंदू वहां से ऑलमोस्ट फिनिश कर दिए, सेम विद सिख्स एंड क्रिश्चियंस। तो जब वो भारत को देखते हैं, वो ये रियलाइज करते हैं कि एक जमाने में हमारे जो बाप दादा थे वो भी काफिर थे। और मैं एक पाकिस्तानी मूवी देख रहा था, उसका नाम मैं भूल गया, मैंने सिर्फ एक छोटी देर के लिए वो देखी, और उसमें एक डायलॉग हो रहा था जिसमें कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर किसी और से बात कर रहा था, पूछ रहा था कि क्या आप हमेशा से मुस्लिम थे? कहते नहीं, मैं हमेशा से मुस्लिम नहीं था, या हम हमेशा से मुस्लिम नहीं थे, हमारे बाप दादा किसी दूसरे रिलीजन के थे, वो हिंदू का नाम भी नहीं लेना चाहते, पर इस्लाम वॉज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। सो दिस इज देयर फंडामेंटल फिलोसफी। प्लस दे रियलाइज कि they have gone to a better, in their mind gone to a better thing। और उन्होंने, और जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर एक काफिरों का लैंड था और वो लैंड काफिरों से मुस्लिम्स ने क्लीन कर दिया है, तो अब हम उनको वापस कैसे लेने दे सकते हैं? एक बार जब एक काफिर की लैंड पूरी तरह से साफ हो गई है काफिरों से, हम उसको वापस कैसे कर सकते हैं? दैट इज नेचुरली आवर लैंड। तो जब ये फंडामेंटल उनका ये जो बुनियादी उनका जो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जब हम उसको समझेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि नॉट ओनली कश्मीर बट ऑल ऑफ भारत इज एसेंशियल फॉर देम। नाउ कश्मीर की जब बात होती है, उसके बहुत सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजंस भी हैं। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बेसिकली कमर्शियल आर्मी है। हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी की जो फौजी फाउंडेशंस हैं वो बहुत सारे, इनफैक्ट वो एक मल्टी डोमेन डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट है। वो सीमेंट, पोर्नोग्राफी, सैनिटरी नैपकिन्स, घी, किडनैपिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टील, कंस्ट्रक्शन और कॉर्नर प्लॉट तो करते ही करते हैं। वो पूरा एक डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट है, वो उसका बिजनेस करते हैं। तो उस बिजनेस को करने के लिए उनको एक बताना पड़ता है कि पाकिस्तानी आर्मी का होना बहुत जरूरी है इस्लाम के लिए, एंड नेचुरली उसका एक एस्पेक्ट है कि हमको कश्मीर को लेना है।
दूसरी बात, उनके जो सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी कहते हैं कि कश्मीर हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीजें देखते हुए, नंबर वन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इस्लाम का कि काफिर का होना हमारे लिए जुल्म है और हमें उसको निकालना पड़ेगा, और ये लैंड्स काफिर से हमने साफ कर दिए तो हमें उसको लेना चाहिए। और नंबर टू जो प्रैक्टिकल रीजंस हैं पाकिस्तानी आर्मी के एग्जिस्टेंस के, उनका कंग्लोमरेट चलाने के लिए, वो दोनों विल ऑलवेज बी देयर। सो देयरफॉर मेरा ये मानना है कि ये 100% उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, कोई भी पार्टी पार पे है, जो उनका फंडामेंटल डिजायर है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये उनके जो फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स हैं, सच एज, मैंने बहुत सारे आर्मी वालों को पूछा कि क्या आपने कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पढ़ी है, अभी तक मुझे कोई नहीं मिला जिसने पढ़ी है। मिलेगा भी तो नहीं। उसको 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 पढ़े बिना यदि वो पाकिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। और जो आपने कहा, आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट आई हैव हर्ड समबडी, किसी ने मुझको ये कहा कि काफिर की एक वेरी एग्जिस्टेंस उनके लिए, उनके ऊपर जुल्म है। और ये इस्लाम का, कुरान का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वेरी फंडामेंटल। वेरी फंडामेंटल। अल बकरा 2.216, that's what it says, that kafir is the one who is the oppressor. और कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर कहती है कि इट इज देयर ड्यूटी टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ना तो ऑपरेशन की कुरानिक मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं और ना इनजस्टिस की कुरानिक मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इनजस्टिस की कुरानिक मीनिंग जो है वो 32.20 है कि एनीबॉडी हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अल्लाह's आयत्स is committing injustice, and anybody who denies Allah's commandments is an oppressor. तो बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल मुद्दे की बात पकड़ी है। और मैं अब डॉक्टर शिव के पास जाता हूँ। आई होप योर दिस थिंग इज मोर स्टेबल। तो आपके पास आप म्यूटेड हैं। तो मुझे ये पता चला है कि आपके पास पाकिस्तान से पीओके छीनने का कोई सिनिस्टर प्लान है, वो जरा हमें बताएं। नहीं, उससे पहले मैं अरे रे, कैन यू हियर मी? यस, Yeah, because I've lost my picture, but if I can continue to speak, please tell me if you can't hear me. no, we can see you and we can hear you. Okay, only I can't see myself, I think. See, I want excuse me. Now we lost you again. I think he's सर having मैं ये रेकमेंडेशन दूंगा कि आप ये ओपनली मत बोलें। मेरे को लगता है आईएसआई शायद मॉनिटर कर रहा हो और वो सिग्नल से इंटरफेरेंस कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ। सिग्नल्स जैम कर दिए उन्होंने। लग रहा है उनको सर, पता चल गया कि इनके पास कोई प्लान है। प्लान है, वो प्लान बाहर नहीं आना चाहिए। बट फनीली इनफ उनको तो पता होना चाहिए प्लान। दे शुड बी हैप्पी टू गेट द प्लान। उनको प्लान अगर पता लग जाएगा तो दे शुड बी वेरी हैप्पी कि कोई ओपनली बात कर रहा है, तो दे शुड बी एबल टू काउंटर इट। आई थिंक उनका कंसर्न ये है कि अगर कोई प्लान जो फीजिबल है और प्रैक्टिकल है और जो इम्प्लीमेंटेबल है, अगर वो ओपनली डिस्कस होने लगा तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर पड़ेगा कि आप इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते। तो अभी तक इट्स ऑल गोइंग वेल फॉर देम। तो अभी आपको क्या लगता है, ये आप जो देख रहे हैं, जो रिजीम चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि पिछले साल 1.5 साल से तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट काफ़ी डिफेंसिव थी। आपको लगता है कोई चेंज आएगा उनके आउटलुक में, कोई इस तरह की बात होगी? नहीं सर, मैं ना अगर हम ये पूरा जो क्योंकि हम कश्मीर के बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा इसका एनालिसिस करें कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और पिछले 30 साल में उन्होंने क्या अचीव करी है, तो आई थिंक थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी इस पे। जी हाँ, जी। और मैं ये पाकिस्तानी आर्मी और के पर्सपेक्टिव से ये एनालिसिस करूंगा। देखिए, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि हम इंडिया से कन्वेंशनल वॉर में तो जीत नहीं सकते, वो क्लियर है। अगर वो कन्वेंशनल वॉर पे जीत नहीं सकते तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इंडिया को क्षति पहुंचाई जाए, स्पेशली इंडियन आर्मी को। और वो उनका बेसिकली लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉर था, जो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान में, पंजाब में भी किया। अगर हम उसका उनका जो प्रोसिक्यूशन है, जैसे वो प्रोसिक्यूशन करते हैं उसका, वो कैसे करते हैं, इज वेरी वेल नोन, बट मैं 2 मिनट लूंगा एक्सप्लेन करने में।
उनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि वहां से वो इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर भेजें और यहां से भी थोड़े से यूथ वहां लेके जाएं ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके। साइमल्टेनियसली स्ट्रक्चर्स क्रिएट करें कि जो इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन है वो इंक्रीज हो। वो तो वैसे ही है, दैट इज ऑलवेज देयर, जो हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज ऑलवेज देयर, बट उसको एक फोकस मैनर से उस इंडोक्ट्रिनेशन को इंक्रीज किया जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये इन्फिल्ट्रेशन शुरू की फ्रॉम द 1990s। हमारा जो डिफेंस था उनके अगेंस्ट वो बेसिकली ये था कि एक जगह पे हम इन्फिल्ट्रेशन रोकेंगे थ्रू समथिंग जो जिसको हम कहते हैं हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, और आइडिया था कि लोग अंदर मत आने दीजिए, और जब लोग अंदर आ जाते हैं तो मैक्सिमम को आप मारिए या उनको अरेस्ट करके पुलिस को दीजिए, बट दैट इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि अगर आप उसको अरेस्ट करके पुलिस को दे देंगे तो वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं। बट इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि एक तो उनको रोकिए अंदर आने से, और दूसरा बेसिकली जो अंदर आ गए हैं उनको या तो ऑपरेशंस में मारिए या उनको अरेस्ट कीजिए। नाउ इस केस में जब 1990s में था तो बहुत सारे लोग आते थे, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरे मुस्लिम उम्मा से लोग आते थे। और उस जमाने में लोगों को सुनने में ये इन द 90s ये वहां होता था कि अगर ये लोग, if these people were half as brave and 1/4 as motivated by as the LTT, we would have lost the valley। ये वैली में उस टाइम में लोग कहते थे, आर्मी में ये होता था। तो इसका ये था कि ये लोग ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थे और ज्यादा करेजियस नहीं थे, बट स्टिल बहुत हैवी नंबर्स में आते थे, तो प्रॉब्लम्स होती थी, कैजुअलिटीज, हमें हैवी कैजुअलिटीज होती थी। उसके बाद हमने वो फेंस लगा दी और उसके बाद हमने कोशिश की कि उसको कंट्रोल किया जाए। नाउ बेसिकली हमारा जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो है इसको रोकने का, इन्फिल्ट्रेशन रोकने का। हमारा पूरा का पूरा फोकस है इन्फिल्ट्रेशन रोकने का, बट हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन से पहले जो उनके कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स हैं और लॉन्च पैड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ऐसा होता है कि जो वैसे ट्रेन है वो इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बट इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन। आप जितना भी टाइट ग्रिड रखें, अगर 10 लोग इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करेंगे 4 निकलेंगे 100%। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप देम, टेरेन इज सच। तो अगर हम पाकिस्तान की साइड से देखते हैं, ये उनके लिए कॉस्टलेस एक्सरसाइज है। उन्होंने रफली अबाउट 3000 कैजुअलिटीज इंडियन आर्मी पे इंपोज की हैं, प्लस अनदर 2000 टू द टोटल अदर सिक्योरिटी फोर्सेस। 5000 उन्होंने कैजुअलिटीज इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस पे इंपोज की हैं। उन्होंने मेरे हिसाब से, मेरे पास नंबर्स नहीं है, बट 10 से 15 कमांडिंग ऑफिसर्स को उन्होंने मारा है हमारे थ्रू दिस प्रोसेस, कर्नल्स। 1990 से हमने एक सिंगल पाकिस्तानी कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं मारा अभी तक। तो अगर उनकी साइड से आप देखें सर, तो फॉर अ कॉस्टलेस एक्सरसाइज, बिकॉज सारे जिहादीज एक्सपेंडेबल हैं, एब्सोल्युटली एक्सपेंडेबल, उनको आप एक्सचेंज करते हो इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, तो उनके लिए तो कॉस्टलेस एक्सरसाइज है। यू कीप कैरिंग इट ऑन, उसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये 10 कोर जो रावलपिंडी में है उसके अंदर ये आता है, वो वे करते रहते हैं। तो अगर वो इस पूरे सिचुएशन को देखें, उनके पास एक मेजर चेंज आया था जब इंडिया ने 370 हटाया था। दैट वाज अ डेंजरस सिचुएशन फॉर देम। पर हमने क्या किया, हमने उसको हटाने के बाद हमने वो फॉलो थ्रू नहीं किया, और इनफैक्ट अभी हम वापस ले रहे हैं। अगेन वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स, बट उसमें जो 2 मेजर थिंग है कि जो डीलिमिटेशन हो रही है वहां, वो बेसिकली एक गलत सेंसस की वजह से हो रही है, बेसिस पे हो रही है, उस पर डिस्कस कर सकते हैं इफ नेसेसरी। और दूसरी बात है कि हम इलेक्शंस के पीछे एकदम पड़ गए कि आप इलेक्शंस कराइए। और जो गवर्नर्स हैं, उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, जैसे आपने बहुत बार बोला है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनका जो कैबिनेट एडवाइजर्स हैं, वो बेसिकली काफी इन्वॉल्व हैं वेरियस थिंग्स में, जैसे लैंड जिहाद एंड सो ऑन सो फोर्थ। हाँ, वो तो बशीर और फारूक तो उसके चैंपियंस थे दोनों। हाँ, और उनको हटाना पड़ा इनको। हम 1 साल से चिल्ला रहे हैं, 1.5 साल से, कि दीज आर टेंटेड पीपल, अब जाके उनको हटाया। बशीर का भाई मुनीर भी तो आईपीएस में था ना, कजन है कि रियल भाई? मुनीर अहमद, हाँ, मुनीर भाई है उसका, रियल भाई है। ओके, आई थिंक बशीर वाज फ्रॉम कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और फिर आईएएस में बन गया, कमिश्नर था आपका कश्मीर डिवीजन। तो आपने बहुत एफर्ट किया इसके बारे में, और इस पे सिग्निफिकेंट जानकारी मुझे आप लोगों के सौजन्य से ही मिली है। बहुत सारी चीजें हैं, आई मीन टू द एक्सटेंट सर कि ये पब्लिक डोमेन में है। लेफ्टिनेंट जनरल सरनजीत सिंह, जो 16 कोर नगरोटा के जो जीओसी थे,
उन्होंने मेरे ख्याल से 2018 या 2019 में, मैं भूल गया एग्जैक्ट डेट, एक चिट्ठी लिखी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जबरदस्त अमाउंट ऑफ इंक्रोचमेंट हो रही है नगरोटा के आसपास। तो मेन पॉइंट मैं ये मेक कर रहा हूं कि जो फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल। इंडियन आर्मी को कैजुअलिटीज हो रही हैं, इंडियन सिविलियंस को कैजुअलिटीज हो रही हैं। 370 एक डेंजर सिचुएशन थी उनके लिए, बट इंडियन गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है कि वो स्टेप बैक ले रहे हैं। तो उनके हिसाब से उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्शंस हो गए इंडिया में और इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्शंस करवा दिए, तो बेसिकली डिफैक्टो 350 विल बी 370 विल बी बैक। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, थोड़े साल वेट करेंगे और ऑटोमेटिकली जब वो इस्लामिक थिंग इंक्रीज होगा, जैसे कि पूरे भारत में हो रहा है, हमने देखा रामनवमी में क्या हुआ, हर जगह हो रहा है। At some stage, maybe the elected democratic government of Jammu and Kashmir says कि हमको पाकिस्तान वहां जाना है, and that will create a problem for us. तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। Basically, they just carry on doing what they are. हम ऑटोमेटिकली ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि उनका मुद्दा ऑटोमेटिकली हासिल हो जाएगा, आज नहीं तो 2, 4, 5, 10 साल के बाद। जी, वेलकम बैक डॉक्टर शिव। Thank you. Sorry, I hope you can hear me. Yes, we can hear you. We can see you Yeah, much better than yeah. on I your don't know laptop. why. Something was wrong with my laptop. I'm on my phone now. So, Yes. a few things. मैं अंग्रेजी में बात करूंगा. Please excuse me. I have to say this like this. You see, this change of government is very unfortunate. Because here in India, people will think that some great new thing is going to happen. They think in Pakistan, change of civilian government is complete drama. It means absolutely nothing. The army is still in charge. And people in India, they don't understand some basic things. See, in Pakistan, with 97% Muslims, there is open anti-Hindu talk. You can say Hindus, I'll come to that in a couple of minutes. You can openly curse Hindus, say Hindus are bad, India is bad. You can say all those things. But we in India can't talk about Pakistanis saying all those things because of secularism. We say, oh, our Muslims will feel bad. Our Indian Muslims. We dialogues never do that. We allow you. No, I know that. No, we don't do that. That's right. So what happens? In our form of secularism, we are looking at Pakistan for validation. And what happens is, I'll just look at my notes for 1 second. Okay. Now, yeah. So let me just read what is Pakistani. Okay. Before I say that, 1973, Zia-ul Haq, after the 1971 war, Zia-ul Haq hanged Bhutto, and then he changed the teaching curriculum. So 1973 to 2022, it is now 49 years. All children after 1973 have been educated to hate Hindus. For example, I will read this. Hindu racists wanted to eliminate not only Muslims but all non-Hindus. Christians and other minorities became victims of racist and biased policies on a regular basis. Even half century after creation of Pakistan, these organizations are still working to eliminate Muslims. As a result, violence has occurred between Hindus and other groups living in Pakistan, which resulted in the destruction of Babri Masjid and Hindu-Muslim riots in Gujarat. That's one thing. In the case of South Asia, in which people of different religions, colors, and castes live, Muslims did not want to live as a minority under the domination of a nation of Hindus whose practices are opposite to Islamic teachings, caste system, social discrimination, idol worship, etc. That's the biggest lie, actually. Yeah, see, let me see. Yeah. If you've been listening to my talk with these backward Muslims, yes. then you would know that. Yeah. Yeah, no. See, this is the thing. See, this is what they teach their children. The whole country, as a people, they are against India, although they don't reveal it. Now, we need to understand one more thing. The army is in charge. Civilian government means nothing. And the army has this thing. The army believes that it is both the defender of the physical boundary, the borders of Pakistan, and the defender of the ideological boundary. Ideological boundary of Pakistan is Islam. Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. So these people,
the army controls their people by saying that we are protecting Islam, you must support us. And actually all Islamic governments are sort of dictatorship, because what happens is, normally in a government you have the executive which controls the finances, you have a separate judiciary, and you have the armed forces that are separate. But in all Islamic governments, okay, you have the finances and the military under control of in one group. So what happens is, you have all these very, very rich army fellows who are controlling their people and saying that we are fighting for Islam. You can't oppose us. Unless the army goes out of power, Pakistan will never change. And Akshay ji is absolutely correct in saying that Pakistan will never make peace with India. Pakistan will never ever make peace with India. Either we have to break Pakistan, take over POK, or we have to finish that army. This is something we must understand right now, because if we don't understand, it's going to be nothing. We people are living in a dream. Indians are living in a dream. We don't know what is going on. We don't know what is happening in Pakistan. We think everything is going to be all right. Everything is not going to be all right. And Pakistan is not such a poor country. The reason is like this. Pakistan is a very fertile nation. Everybody gets food. There's plenty of food. Once everybody gets food, if you talk about the system that was there 200, 300, 500 years ago, food was there in many places. There was no medical care, nothing. People used to somehow survive. Pakistanis will survive, but it's the elite who are rich, and they're getting everything they want in terms of arms. Let's come to your plan, sir. No, that's what my plan is same as Akshay ji's plan. No, I believe you have a sinister plan of taking over POK. Let's talk about that. We have to take over POK actually. I prefer, in fact, that was my plan previously. But after this BrahMos incident, I feel what we should do is, knock off the generals and of the Pakistan army should feel directly threatened. That is the only way. Otherwise, nothing is going to move forward. This is my feeling about it. जी, मैं अक्षय जी के पास वापस चलता हूँ. अक्षय जी, आपकी बात से सहमत हैं डॉक्टर शिव, और कह रहे हैं कि जब तक कि जनरल्स और जो हायर आर्मी हायरार्की है वो जब तक खतरा महसूस नहीं करेगी, तब तक पाकिस्तान आर्मी में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है. मैं सहमत हूं सर, बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बोला, उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, उनकी स्ट्रैटेजी तो काम कर रही है. उनको कॉस्टलेस स्ट्रैटेजी है. उनको सिर्फ टाइम पास करना है, और एक ऐसा समय आएगा जब पूरे के पूरे भारत में ऐसे इस्लामिक अपराइजिंग बहुत सारी जगह पे होंगी, तो वो कर सकते हैं ना. आप मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाहते हैं, तो मैं डायरेक्टली एड्रेस कर देता हूं उसको कि क्या पाकिस्तान POK लेना संभव है कि नहीं. आई थिंक ये आप पूछना चाहते हैं. जी हाँ. तो मेरे हिसाब से POK लेना संभव है. इट इज पॉसिबल सर. वेरी 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 ब्रीफली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं. देयर विल बी अदर वेज ऑफ डूइंग इट आल्सो, बट एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं वेरी ब्रीफली. सारा इस पे निर्भर, इस पूरी चीज को अगर आप POK लेना चाहते हैं, तो मिलिट्रीली POK लेना चाहते हैं, तो मेन निर्भर इस पे इतना करता है कि POK में अपोजिंग फोर्सेस कितनी है. अगर 3-4 ब्रिगेड हैं और आप POK को जब आप ऑपरेशंस लॉन्च करो, ये इस एरिया को और रफली पूरे के पूरे पाकिस्तान से कट ऑफ कर सकते हो ताकि और एनफोर्समेंट्स ना आए, तब आप हेलीबॉर्न ऑपरेशंस करके पीछे जाके ये जो उनके जो मेन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स एरिया हैं, जैसे गिलगिट हो गया, चिलास हो गया, वहां जाके स्कार्दू, वहां जाके जो मेन अर्बन एरियाज हैं, अगर वहां जाके उनके जो मेन क्रॉसरोड्स हैं उनको ले सकते हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी की जो फॉर्मेशंस और जो टुकड़ियां हैं जो हाइट्स पे बैठी हुई हैं, LC पे, उनको खाना, पानी, स्पेशली खाना और एमुनेशन जाना मुश्किल हो जाएगा. और अगर आप इस ऑपरेशन को 2-3 महीने सस्टेन कर सकते हैं, तो आप उनको स्टार्व आउट कर सकते हैं. इट्स अ रिस्की ऑपरेशन, एंड देयर विल बी अदर वेज यू कैन डू इट आल्सो. तो ये सब उस पर डिपेंड करता है कि आपके प्लान्स क्या हैं, कितना आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सकते हैं, आप डिसेप्शन कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ.
तो उसमें डिटेल में तो नहीं जा सकते अभी, पर मैं इसमें 2-3 चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें कहना चाहता हूं। अगर आपने लेट्स से आपने पीओके को कैप्चर कर लिया, तो आप कौन से एरिया को देख रहे हैं? आप पूरे का पूरा पीओके तो नहीं ले सकते। देयर आर 40 लाख मुस्लिम्स देयर। अगर आप जम्मू वाले एरिया में वहां चले जाएं, जैसे मीरपुर एंड ऑल है, आई थिंक इट्स सिली टू गो देयर। तो मेरा जो फोकस है, मैं जिसके बात कर रहा हूं, वो बेसिकली गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में है, रफली, नॉट इन लोअर हाइट्स। तो मैं बेसिकली गिलगिट और स्कार्दू तक बात कर रहा हूँ, perhaps not even गिलगिट, लिटिल बिट ऑफ स्कार्दू एंड उस एरियाज में, चिलास एंड ऑल दैट। बट वहां भी आपके पास 1.5 मिलियन मुस्लिम्स हैं। नो, अगर आपने वो ले लिया, हमारी कैजुअलिटीज तो होंगी, दैट इज फाइन। बट अगर आपने वो ले लिया और उसके बाद वो 1.5 मिलियन मुस्लिम्स को आप फिर इंडिया में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और आपका जो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबका साथ, सबका विश्वास, डीएनए इज द सेम, अगर उस पे करेंगे, then that is a very, very bad choice. Because as it is, sir, with due respect, as it is, हम massive appeasement कर रहे हैं पिछले 5-6 साल में। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उसका बजट 5,000 करोड़ है, एडिशनल 900 करोड़ के करीब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आता है। तो आप इतनी जबरदस्त अपीजमेंट कर रहे हैं, अगर वैसे ही अपने लोगों के साथ आप वो कर रहे हैं, अगर वो लेके आएंगे तो आप उससे डबल करेंगे कि ये तो हमारे मेहमान हैं, इनको अंदर लो। तो उस सिचुएशन में मैं एक प्रोवोकेटिव चीज बोलूंगा, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट। मैं अपने गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठी, मद्रासी, सिख, जाट, बिहारी, नागा भाई, गोरखा भाई, इनके सब इन लोगों को अपीज करने के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। सो आई विल नॉट सपोर्ट दिस ऑपरेशन टिल सच टाइम हमें 100% गारंटी हो कि ये पूरा का पूरा सबका विश्वास का कॉन्सेप्ट, ये सेम डीएनए का कॉन्सेप्ट, ये सब चला जाएगा। या तो आप उनके जो पॉपुलेशन है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए कि वो मीरपुर शीरपुर भागें, या आप उनको वहां की डेमोग्राफी चेंज करिए किसी तरीके से। अदरवाइज मैं एक और सजेशन देता हूं सर, आप जो ऑपरेशन करें पाकिस्तान के अगेंस्ट, लैंड कैप्चर करने के लिए नहीं करें, फॉर दिस रीजन, क्योंकि हम ये सबका साथ, सबका विश्वास में चले जाते हैं। आप पाकिस्तानी आर्मी का बैलेंस ब्रेक करने के लिए करें, टू डिफीट देम ऑन द बैटलफील्ड, एंड दैट इज वेरी पॉसिबल। इनफैक्ट वो थोड़ा ज्यादा आसान है। तो इसमें मैं 2 मिनट लेके एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो पाकिस्तान इज लाइक अ केला। हाँ, केले जैसा, इट इज लाइक अ डॉग एक्चुअली। तो डॉग की जो पूंछ है वो वेरी राइट। तो सर उसमें इट इज बाइसेक्टेड, जो सिंधु नदी है वो उसको बाइसेक्ट करती है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। और जो पंजाब की 5 नदियां हैं, और मैं क्रम से चलता हूं, सतलुज, चिनाब, रावी और झेलम, मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो सारी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट फ्लो करके रावी में, इंडस में मिल जाती हैं। तो अगर आप पूरा का पूरा पाकिस्तानी आर्मी का ऑर्बिट देखें तो उनके पास 20 डिविजन्स हैं, ठीक है? वो थोड़े कोर्स में बटी हुई है, मैं डिविजन्स की बात करता हूं, 20-22 डिविजन्स हैं। उनमें से जो 20 डिविजन्स हैं, 13 डिविजन्स पाकिस्तानी पंजाब में है। तो अगर हम उन 13 डिविजन्स को पाकिस्तानी पंजाब तक सीमित कर सकें और ये इंश्योर करें कि वो नॉर्थ से जाके साउथ को रीइंफोर्स ना करें, तो हम अपनी स्ट्राइक फोर्सेस लेके, वो बेसिकली हमारी 2 कोर, 21 कोर सपोर्टेड विद 12 कोर, हम बेसिकली जो रहीमियार खान से साउथ जो एरिया है पूरा का पूरा, चोलिस्तान से साउथ का एरिया है जो पूरा का पूरा, हम वहां असॉल्ट कर सकते हैं। हम बाड़मेर से टुवर्ड्स उमरकोट, कराची साइड तक भी जाके, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू गो टू कराची, बट आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो आइडिया फंडामेंटली ये है कि आप पाकिस्तानी आर्मी को बैटलफील्ड में हराइए, जितनी ज्यादा कैजुअलिटीज इंपोज कर सकते हैं उन पे इंपोज करिए, पाकिस्तान की जो नॉर्थ साउथ आर्टरीज हैं उनको ब्लॉक करिए, बट सिटीज मत लीजिए। और ये किया जा सकता है।
हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान के लिए, केवल पाकिस्तान के लिए 20 डिविजन्स हैं, उनके पास टोटल 20 डिविजन्स हैं। तो अगर हम उन 13 डिविजन्स को ऊपर रखें और हमारी जो बेसिकली जो हमारी वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड की फॉर्मेशंस हैं, जो बेसिकली हैं ऊपर से नीचे तक, हमारी 15 कोर, 16 कोर, 9 कोर, 11 कोर, 1 कोर, 10 कोर, 12 कोर और 21 कोर एज स्ट्राइक कोर। तो सॉरी 10 कोर, सॉरी 11 कोर तक, जलंधर तक उनको वहां होल्ड करें, जो जलंधर तक होल्ड करें, और बाकी जो हमारी साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड की फॉर्मेशंस हैं उनसे हम स्ट्राइक करें। और ये हमारा कॉन्सेप्ट पराक्रम में एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट, पराक्रम में हमारा एक कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही था कि बेसिकली जो डेजर्ट के एरिया में है उस एरिया में हम थ्रस्ट करेंगे। और आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली उनकी जो नॉर्थ साउथ कम्युनिकेशन है वो काटनी है। हाँ, रहीम यार खान तो सिर्फ 50-60 किलोमीटर है बॉर्डर से। हाँ, नॉट टू फार, और उसके अगेंस्ट कनाल डिफेंसेस बहुत है। मैं बाड़मेर में रहा हूँ लंबे समय तक, मुझे आइडिया है उस पूरी ट्रेन का, पूरे एरिया का। राइट। और आप जो है वो जो बाड़मेर का जो साउथ है, जो बाखासर, जो रन ऑफ कच्छ से जहाँ जो मिलता है, वहाँ से भी आप कराची की तरफ मूव कर सकते हैं। हाँ, तो सर कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऑपरेशंस वहां करिए, पीओके में एक फेंट करिए, डिसेप्शन, उनको सोचने दीजिए कि पीओके जा रहे हैं ताकि ऊपर तक रखें। नाउ इसमें मेन फॉर दिस ऑपरेशन टू बी सक्सेसफुल सर, हमें ऑब्वियसली आपको भी पता है कि प्लेन्स में जनरली 3:1 का रेशियो चाहिए होता है सक्सेस के लिए। नाउ अगर उनके पास 20 डिवीजन है, हमारे पास 20 डिवीजन है ओवरऑल, तो आपको लोकल सुपीरियरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि 13 डिवीजन वहां रोकिए, 13 डिवीजन आपने वहां रोक दी, एक डिवीजन उनको मिनिमम बलूचिस्तान को होल्ड करने के लिए रखी। अभी तो उनके पास 2 डिवीजन है, एक पूरी कोर है वहां। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को होल्ड करने के लिए मिनिमम एक डिवीजन तो रखेंगे। सिंध में उनके पास एक ही कोर है सर, जिसमें 3 डिवीजन है, 5 कोर। तो अगर हम अपनी 21 स्ट्राइक कोर, सेकंड स्ट्राइक कोर, और जो जोधपुर में 12 कोर जिसको डेजर्ट कोर कहते हैं, और हमारी 10 कोर जो बठिंडा में है, उनके स्ट्राइक फॉर्मेशंस इनके अगेंस्ट रखें तो आई थिंक सक्सेस हो सकता है। नाउ मेन क्वेश्चन हियर इज कि आप उनकी 13 डिवीजन को ऊपर कैसे रोकेंगे। और इसको रोकने के लिए, एंड दिस इज व्हाई मैंने उनकी नदियों के बारे में बताया। अगर आप मैप पे देखेंगे, अगर आप इन सारी नदियों पे सारे ब्रिजेस उड़ा दें, मेन ब्रिजेस उड़ा दें, तो उनके जो फॉर्मेशंस हैं उनको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ मूव करने में बहुत कठिनाई होगी। फॉर दिस, मैं सिंपल थिंग सर, उनकी जो फर्स्ट जो सेकंड कोर है मुल्तान में, जिसको वो आर्मी रिजर्व साउथ कहते हैं, स्ट्राइक कोर है, उसको अगर भावलपुर को रीइंफोर्स करना है, जहां उनकी 31 कोर है, हार्डली 100 किलोमीटर का रास्ता है, उसको सतलुज क्रॉस करना पड़ता है। सतलुज में चार ब्रिजेस है। तो अगर आप इस साथ इमीडिएटली इनिशियली विद सरप्राइज उड़ा दें तो उनका नॉर्थ साउथ मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आप लोकल सिक्योरिटी क्रिएट करके अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो पहली बार इस तरह का डिटेल्ड ऑपरेशनल प्लान सुन रहा हूँ। तो मैं बता दूं, ये फौज का कोई प्लान नहीं है, ये मैंने मैप पे देखा है, और कोई भी जो इन इश्यूज को समझता है, जिस मैप पे देखे, उनका ऑर्बिट आपको गूगल पे मिल जाता है, हमारा ऑर्बिट भी गूगल पे है, वो है। तो मैंने कोई ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी की नहीं दी है, और जो हमारी फॉर्मेशंस ने जो पराक्रम में किया, वो दैट इज आल्सो पब्लिक इंफॉर्मेशन। आप नहीं सही कह रहे हैं, आई एम अप्रिशिएटिंग इट। और ख़ास तौर से ऑपरेशन पराक्रम के बारे में भी है। ऑपरेशन पराक्रम के बारे में हम लोग सुनते बहुत कुछ हैं, लेकिन उसके डिटेल प्लान्स क्या थे, उसके डिटेल्स क्या थे, उसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। तो चूँकि हाँ, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा और बता सकें आप, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ऑपरेशन पराक्रम से पाकिस्तान इतना क्यों घबरा गया। पब्लिक इंफॉर्मेशन है पराक्रम में सर। जो हमारी पोजीशनिंग थी जब पराक्रम शुरू हुआ जनवरी में, और जो जून में जो पोजीशनिंग थी उसमें चेंज हो गया था, और हमारी फोर्सेस काफी इस एरिया में राजस्थान में कॉन्सेंट्रेटेड थी। आपको याद होगा लेफ्टिनेंट जनरल कपिल विज, जो सेकंड कोर के कमांडर थे, जीओसी थे, उनको अनसेरेमोनियसली एक दिन कमांड से रिलीव कर दिया गया,
ही वाज रिलीव्ड ऑफ कमांड। और उनको कमांड से इसलिए रिलीव कर दिया गया क्योंकि जो ऑपरेशनल प्लान था उसके मुताबिक वो अपनी कोर को पोजीशन कर रहे थे। क्योंकि एक कमांडर को जब एक ऑपरेशनल प्लान मिलता है और आपको गो के ऑर्डर्स नहीं मिले तब भी आप अपनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को शॉर्टन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बठिंडा में हमारी 10 कोर है। 10 कोर में 3 डिविजन हैं। वो तीनों के तीनों डिविजन राजस्थान में, एक है गंगानगर में, एक है कोटा में और एक है बीकानेर में। ना सर, आपको पता होगा कि कोटा से बीकानेर 500-600 किलोमीटर है, है ना? बिल्कुल। तो अगर 10 कोर को बोला गया कि आपका ये ऑब्जेक्टिव जब ऑपरेशन शुरू होंगे वो है, तो भारतीय टेरिटरी के अंदर वो कोर कमांडर साहब अपनी डिविजन्स को आगे तो लेके आएंगे ना। वो कोटा में जो उनका जो मेन स्ट्राइक रिजर्व है उसको 600 किलोमीटर तो पीछे नहीं रखेंगे अपनी दूसरी फोर्सेस से, मैक्सिमम 50-60 किलोमीटर तक रखेंगे। तो टू कोर के फॉर्मेशंस इलाहाबाद तक हैं। तो नेचुरली जब उन्होंने जब मोबिलाइजेशन हुआ और जब डिविजन्स आई तो उनमें जो ब्रिगेड्स थी वो भी स्प्रेड आउट होंगी, तो उनको वो रैशनलाइज करके अपनी टेरिटरी में, भारतीय टेरिटरी में एक सेंसिबल, जिसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टेंट विद द सेफ्टी ऑफ माय कमांड, कि मैं अपनी कमांड को सेफ रखने के लिए क्या करूं, वो कर रहे थे। उनको यूएस ने सैटेलाइट से देखा, ब्रिजेश मिश्रा को बताया। ब्रिजेश मिश्रा आप जानते ही हैं वो कैसे आदमी थे। उनको रातों रात वहां से रिलीव कर दिया गया। He was one of the finest commanders after General Hanuj Singh and all, General Kapil, which was very good. तो उससे क्या हुआ है, उस समय से when people have seen this, एक थोड़ा सा रिस्क अवर्सनेस और डिफेंसिवनेस आ गया। बस नेचुरली जब गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ये हो जाता है। तो सिंस पराक्रम की बात हो रही थी, मैं ये सोचा बता दूं। जी हाँ, जी हाँ। और इसीलिए पराक्रम में इतना टाइम लग गया मोबिलाइजेशन में, और उसके वजह से वो पूरा का पूरा प्लान कंप्लीट फ्लॉप हुआ एक तरह से। हाँ, हमारी बहुत कैजुअलिटीज हुई सर। हमारी अपनी माइंस में, ब्लास्ट में, ऑफ आवर ओन माइंस वी हैड कैजुअलिटीज। हमारी अपनी कैजुअलिटीज हुई हमारे ओन एरिया में ड्यू टू मोबिलाइजेशन। और जो मैं आपको बता रहा था, ये जो पाकिस्तान की 2 कोर और 31 कोर है, मुल्तान और भावलपुर, जिनको सतलुज क्रॉस करना है, दे क्रॉस द सतलुज। तो जब आप अगर ब्रिजेस डिस्ट्रॉय करने हैं, वो तो ब्रिजेस आपको एकदम सरप्राइज से डिस्ट्रॉय करने हैं ना। ब्रिजेस तब थोड़ा डिस्ट्रॉय कर लेंगे जो कि वो लोग पहुंच के जहां उनको पहुंचना है। ब्रिजेस डिस्ट्रॉय करने का मेथड ये है कि वो वहां पहुंच ना पाए जहां आप उनको नहीं पहुंचना देना चाहते। बट अगर आप वेट करें, सरप्राइज लूज कर दें, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए दीज थिंग्स हैव टू बी डन विद एब्सोल्यूट सरप्राइज। स्ट्रेटेजिक सरप्राइज भी, टैक्टिकल सरप्राइज भी। स्ट्रेटेजिक सरप्राइज जैसे गवर्नमेंट क्रिएट करती है कि कहती है हाँ हम पीओके देखेंगे, और टैक्टिकल सरप्राइज लोकल लेवल पे कमांडर्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, आपने जो ये मेंशन किया अबाउट बाल्टिस्तान पर्टिकुलरली, तो बाल्टिस्तान में 71 में हमने बाल्टिस्तान का एक पार्ट कैप्चर किया, तुर्तुक और उसके थोड़ा आगे तक। तो वहाँ तो हमें क्योंकि पॉपुलेशन इज़ वेरी स्पार्स ऑल्सो, तो हमें किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आज तक फेस नहीं हुई है। आई वाज टॉकिंग टू अ जनरल हु हैज़ बीन इन दैट एरिया, और उनसे मैंने पूछा था कि व्हाट वुड बी द मोस्ट सेंसिबल प्लान ऑफ टेकिंग ओवर पीओके। तो अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पीओके को टेक ओवर करना है, जो आपने जो प्लान 1 बोला था उसके बारे में, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा था। उन्होंने कहा कि यू हैव टू, द ईजिएस्ट प्लेस टू टेक ओवर इज खापलू, which is just below the Saltoro Ridge. Okay, and if you take over Khaplu, then the way to Skardu is almost open. So of course you have high ridges both sides of that river, जो हमारी शौक रिवर है उसके। तो ये उन्होंने मुझको कहा था। तो what do you feel about that? हाँ सर, it's possible. Again, एक क्वेश्चन is कि अगर एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव हो और आप सरप्राइज के साथ लॉन्च करें और इंश्योर करें कि वहां दुश्मन की रीइंफोर्समेंट्स नहीं पहुंचे, तो इट्स डेफिनेटली डूएबल। और इसमें आप एक्चुअली हेलीकॉप्टर एसेस काफी यूज कर सकते हैं।
You can actually move infantry by helicopters. But the main thing has to be कि आप physical assault ज़्यादा उनकी held positions में मत करें. This is not कि जैसे हमने कारगिल में हमको करना पड़ा वो. That we should not do. So take some specific places, cut them off from the rest of the place and let it be. तो एक limited objective. पूरा का पूरा POK नहीं लेना चाहिए. और I think जब आप ये सब कर रहे हैं, आपका main thrust perhaps ये चोलिस्तान and South में होना चाहिए. चोलिस्तान और साउथ के बारे में आपने एक बात और भी कही कि हमको सिटीज को पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए. 71 में भी हमारी ये स्ट्रैटेजी थी कि हमने सिटीज जो थी हमने बाईपास कर दी थी सारी की सारी. अभी जो हम देख रहे हैं यूक्रेन में जो हो रहा है, वहाँ पे जो ये रशियन आर्मी बॉकडाउन हो गई, आपको क्या लगता है सिटीज के ऊपर कंसंट्रेट करने के कारण ही बॉकडाउन हो गई? हाँ, आई थिंक उसका असर ये है कि उनके ना जो हमने पिछले बार इस पे किया था, उन्होंने 4 थ्रस्ट लॉन्च किया. जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था वो बेसिकली ये जो साउथ में जो कॉरिडोर है, ये आपका डोनेट्स्क, मारियोपोल, खरसोन, ओडेसा तक, वो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था. और आपके जो रेस्ट ऑफ द फोर्सेस थे उनको फेंट की तरह यूज करना चाहिए था ताकि दुश्मन के फोर्सेस ऊपर जाएं, वहां नहीं आए. तो आई थिंक एक तो उन्होंने 3-4 जगह वो लॉन्च कर दिए, नंबर 1. नंबर 2, जैसे हमने डिस्कस किया, उन्होंने अपने जो उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मैन्यूवर बाय फायर. उनके पास आर्टिलरी बहुत 1:1 के रेशो में इन्फेंट्री और आर्टिलरी होती है वहां. हमारा रफली 1:2.5 है या 1:2 है. तो उन्होंने आर्टिलरी अपनी हेवीली यूज नहीं की. और उनकी जो इन्फेंट्री टैक्टिक्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि वो लोग डिस्माउंट होके फ्लैंक्स को कवर नहीं करते, प्रोटेक्ट नहीं करते आर्मर के. और लास्टली नेटो इज फाइटिंग देयर सर. ये जो जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि उनके जो 4-5 जनरल्स मारे हैं इन्होंने, ये 100% नेटो ने नॉट ओनली टारगेट एक्वायर किए हैं बट मेरे असेसमेंट में टारगेट प्रोसिक्यूट भी किए, क्योंकि ये स्नाइपर से नहीं हो सकता. जब आप एक इमीडिएटली जब व्हेन द फर्स्ट पर्सन गोज, सब लोग अपने रैंक टैब्स बैम्स निकाल देते हैं, कैप्स निकाल देते हैं, तो एवरीबॉडी लुक्स द सेम दूर से. और वैसे भी जनरल साहब अपने या तो टेंट में होंगे या अपने कमांड ट्रेलर में होंगे जो कवर्ड होगा, तो स्नाइपर देखेगा कैसे? तो आई थिंक ये 3-4 चीजें हैं कि एक तो दे आर फाइटिंग नेटो इज बीइंग वेरी अग्रेसिव. दूसरा, उन्होंने अपनी जो मेन फायर पावर है वो यूज नहीं की फॉर वेरी गुड रीजंस कि वो समझते हैं कि वो हमारे लोग हैं. और उन्होंने 3-4 ज्यादा एरियाज पे थ्रस्ट कर दिया, प्लस उनके टैक्टिक्स इतने अच्छे नहीं थे. बट अगेन दूसरी बात ये है, डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा है एक स्विस इंटेलिजेंस ऑफिसर से कि एक्चुअली उनके काफी ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी हुए हैं. उनके ऑब्जेक्टिव्स तो ये सिटीज ही थे. एक मिनट में जरा रिक्वेस्ट कर लूं अपने व्यूअर से, या आप कृपया अपने क्वेश्चंस पूछ लें, और आप हमें जो लोग देख रहे हैं वो कृपया लाइक का बटन दबा दें और वीडियो और हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. हाँ, डॉक्टर शिव. Acha, no, see, the objective for Russians was to take the cities, na? In Luhansk and Donetsk. They have to take the cities. There's no other go. They're trying to avoid civilian casualties. They want to extract the population, but the Nazis, the Azov battalions, those fellows are not allowing the population to go. Like in this side, I just wanted to say about Pakistan. You see, what is happening now is, now this fellow here, Shahbaz Sharif, this fellow, 7 wives, typical corrupt Islamic leader. You know, the leaders can always have debauchery and wealth, and the other people remain poor. That is allowed. No, that is allowed. No, it is. Yeah, it is perfectly allowed. What I'm saying. No, but the thing is, the Holy Book allows it, but it's the poorer people who are under control who cannot do the sorts of things. See, for instance, he's not dressed like he should have a beard and no mustache. He dresses in Western clothes. You know, for the people, ordinary people, Pakistanis, they have to look Islamic also. This fellow need not look Islamic. He can drink. He can do whatever he likes. But anyway, that is not the point that I was going to make. The point I'm making is these leaders, they play a double game. For the West and for the others, they dress like this. For the Pakistanis, they are saying we are defending Islam.
So now this fellow has said he wants to make peace with India. And our Indians will say, peace, this is the time, this new leader. Nothing is going to change. This new leader will do nothing. We have to be very careful. And these fellows, Shahbaz Sharif is as bad as anybody else, as his brother Nawaz Sharif was. We really can't trust these people. And as Akshay ji says, you have to threaten. Fear is the key. They have to be afraid. You have to break them. Otherwise, nothing will happen. We are going to be in deep trouble if we don't, read Pakistan the way it needs to be read. And I think we've been over secular, saying no, we must not. We are good people. There is a game in game theory. There is a game. It's a two-player game. It is called tit for tat. Two people play the game. Person A, person B. In the game, person A slaps person B. B slaps back. A slaps, B slaps. After some time, A will not slap. So the idea is, A is hoping that if he does not slap once or twice, B will also understand that they can stop slapping and they'll both stop. Then the game ends. Okay, this is in game theory, but this is not happening with Pakistan. They slap us, we slap back. They slap us, we slap back. Then they slap us, we don't slap. They still slap us. Then again they slap us, we don't slap back. It's not working. There is no use being nice to Pakistan. There's no use dealing with Pakistan. That is ISIS is nothing compared with Pakistan. Pakistan is ISIS with nuclear weapons. And everybody thinks that because these fellows wear suit, boot and speak English, everything is all right. This is the mistake. And I want to warn, it's no use. Hopefully Jaipur dialogues at least is seen by more people, but Indians should be warned. We have to be careful with Pakistan. We can't trust them. They're highly dangerous, totally Islamic fundamentalists. And we can't take this lightly. Bas. I just wanted to say that. Thank you. I will just add, जो डॉक्टर साहब ने बोला, मैं उसको ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले बोला, talk before when you were having these trouble. As a main thing, the focus has to be, we have to understand Islam. So the same things are happening in our country also. रामनवमी पे हमने देख लिया क्या हो रहा है. हाँ, exactly. We know what is happening. So when he is sitting, see, you have to understand that even if he doesn't get Kashmir right now, as long as the kafir is bleeding, वो खुश है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा और काफिर को दर्द हो रहा है. इससे ज्यादा अच्छी सिचुएशन और क्या हो सकती है? उसको अल्लाह रहम देगा, जो भी देता है अल्लाह, तो नेकी देता है अल्लाह. अल्लाह जो है, जितना आप काफिर को हैरान करेंगे, अल्लाह आपको उतनी नेकी बरकत करेगा. राइट. अगर ये 9.120. राइट सर. तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है सर, अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे को कुछ लेने की जरूरत नहीं है. मैं बस तंग करता रहूंगा. और अपने आप काफिर तो अपने आप को तंग कर रहा है. मैंने थोड़ा मुख्तारबाज नकवी को बिठाया हुआ, तो काफिर ने खुद बिठाया. तो काफिर मेरा काम खुद ही कर रहा है. मेरे को तो अपना नॉर्मल काम करना है. मैं चिंता क्यों करूं? एक दिन ऐसा आएगा जहां 3-4 स्टेट्स बोलेंगे हमको इंडिपेंडेंस दे दो, तब मैं और शोर मचाऊंगा. So when people talk about peace, I don't understand what is the concept of this peace. मतलब what does it mean? That do we become an Islamic state? Because that is the only way you can have peace. Islam means peace, they'll say. So, yeah. So when you talk about peace, what are the parameters of that peace? मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि कहाँ लिखा है. आप बता दो अपनी किताब में कि इस्लाम मीन्स पीस कहाँ लिखा हुआ. ये तो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अल तकैया जिसको बोलते हैं. तो आइए अब हम बता. It's okay, carry on. बेवकूफ बन गए हैं हम. Please carry on, sir. We'll look for questions. Now time to take questions. उससे पहले again I want to stress, जो लोग भी नए सब्सक्राइबर्स, जो लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दें. और अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं. क्वेश्चंस के लेट्स टेक क्वेश्चंस. Srinivas Rao, thank you. Girish Kumar, how much to trust the news that muscle power was used on Imran Khan? If this happens, then he can be kept in jail also. Please comment. I think we don't know. Yeah. Muscle power used, this is all nonsensical stuff. Imran Khan, all these fellows are puppets of the army. They may put him in jail, they may kick him.
he is completely expendable. The imagination that there is something great about him. There is no Pakistani politician who can be superior to the army. The army controls everything. As long as Indians, we have this confirmation bias. We see उनका भी parliament है, उनका भी prime minister है, वो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे democracy है. ये सब बिल्कुल फालतू है. It's not like that. It means nothing. Imran Khan can go to hell. Or who cares whether he's muscled or not? That's not how the country works. It's the army that controls it. What happens to Imran Khan does not matter. And this new fellow, Shahbaz Sharif, another puppet. He will talk the same old nonsense. The same thing will go on. Nothing will change. Right. Next. Priyank Bharadwaj, why can't we take POK by bribing PAK generals and exploiting them economically like the Chinese? Isn't it the better way without military intervention? देखिए चाइनीज मूर्ति Pakistan is, yeah. Sorry, Akshay. Go Yes, ahead. Akshay, I'll please. say after. प्रियंक भारद्वाज जी, चाइनीज मूर्ति पूजक नहीं है. चाइनीज आर नॉट मूर्ति पूजक हिंदूज. So for the Pakistani general, we are Satan. You must understand that. तो वो bribe करके bribe ले लेगा पर काम नहीं करेगा. Bribe you can give him, he'll very happily take the bribe. There's no problem. But Kafir giving bribe. POK आपको दे भी देगा. अगर आपने उसने POK दे भी देगा, आप 40 लाख मुस्लिम से साथ क्या करेंगे सर? Next. गिरीश कुमार बिलोर, बलोचिस्तान और सिंधु देश पर क्या टिप्पणी है कपूर सर? इसमें देखिए ब्रॉडली जो जैसे डॉक्टर शिव साहब ने पहले बोला था कि एक हमारा जो विकल्प है वो है कि हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ें और हेल्प करें, और वो करने के लिए हमें काइनेटिक एक्शन लेना पड़ेगा. पाकिस्तानी आर्मी को ग्राउंड पे हराना पड़ेगा ताकि लोग रियलाइज करें कि वो इतनी पावरफुल आर्मी है. जब वो होगा तो ये हमारा होप है कि सिंधु देश सेपरेट बन जाएगा और बलूचिस्तान सेपरेट बन जाएगा. वेदर ये होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है. देयर आर मेनी पीपल हु से कि ये हो जाएगा, बट हमें पता नहीं. मैं किसी सर्टेनिटी से आपको गारंटी तो बिल्कुल नहीं दे सकता कि ये होगा. बट अगर आप पाकिस्तानी आर्मी को डिस्ट्रॉय करें, एक हेवी डिफीट उन पे इन्फ्लिक्ट करें, जबरदस्त कैजुअलिटीज करें, तो चांसेस हैं कि ये हो सकता है, पर उसके लिए बहुत सारी और भी चीजें करनी पड़ेंगी. Okay. Doc, you wanted to add something? No, I think Akshay said it perfectly. The thing is, Pakistan knows very well that we Kafirs are scared. Unless we take kinetic action, nothing will work. Next. Abhinav Singh, we should focus on neutralizing our chicken neck and use internal fault lines to disintegrate Pakistan. I mean, you're talking about the J&K chicken neck, I guess? Akhnur. There are 2 chicken necks. There's one in the east and one in the west. One east, yeah. इसकी all this. इसकी जो story है, I'll just tell you very quickly. Pakistan used to say that this salient is when you have something jutting into the enemy territory on 3 sides. Pakistan used to say this salient is at a dagger at the heart of India, Akhnur ko. तो जनरल ज़ुरू बख्शी होते थे, जोरावर चंद बख्शी, ZC Bakshi. So he's a divisional commander there. He said, "I will wring this. This is not a dagger. This is a chicken neck, and I will wring this chicken's neck." And he did it. This internal fault lines and all. There is no internal fault line. Army is in charge. Islam is ruling. So it's you have to hit the army. Okay, next. Next question. Shri Harsha. Namaskar, sirs. Congress is so Rahul Gandhi that they're not realizing that taking back POJK will only add their voters, and General VK Singh as Defense Minister will be any different from current कड़ी निंदा सर. इसीलिए तो जनरल वीके सिंह को बना नहीं रहे हैं.
You know, I will only say this, मैं इसमें because this is ये dangerous minefield territory है, जूते पड़ेंगे इसमें. I will only say this कि you should read. People should read about Lieutenant Sagat Singh and Hanuj Singh. Sagat Singh. There's a book called Sagat Singh, Master of War. He is the one who won 71 for us. So we need. Yes. Hanji sir. Absolutely, I agree with you. So he has been our best field commander ever since 1947, and then there was General Hanuj Singh also, but he didn't get to command a large formation in war, though he commanded Pune Horse and won a Mahavir Chakra. But my point is कि those kind of generals are few and far between. And I will just say that of all the chiefs that we have had in the recent past, General V.K. Singh was one of the better ones. And that is definitely one of the better ones. Okay, next. Suman Saurabh. Breaking of PK will demoralize. Other than that, it will always give them hope that someday they will make it Darul Islam. After Ram Mandir verdict, OSC said one day Babri Mosque will be rebuilt on that place. Sorry, can you read the question again? Yeah, sorry. Yeah, Akshay, you take it. So I think all of these matters actually, अगर आपने Unbreaking India या भारत अखंडन पढ़ी है संजय दीक्षित जी वाली, तो जो इसका जो जैसे आप कह सकते हैं लोडस्टोन या जो फंडामेंटल वन ऑफ द फंडामेंटल जो स्टोन जिस पे पूरी की पूरी इमारत खड़ी हुई है, उसको कैसे निकाला जाए, ये संजय जी ने बहुत अच्छी तरह से उसमें दिया हुआ है. तो आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान को ब्रेक करना चाहिए, बट आई विल जस्ट से दिस कि हमें अपना कश्मीर भी हमने जो 370 हटा के जो पॉजिटिव चीज किया है वो हम पीछे जा रहे हैं. दैट इज अ लिटिल वरीसम, क्वाइट वरीसम एक्चुअली. Yes. So we are again handing it back to, or rather trying to hand it back to the same separatists which caused the havoc. वही soft separatists को हम befriend कर रहे हैं, hoping against hope कि it will work again. अरे भाई, जो चीज़ 10 बार पीछे काम नहीं की वो 11वीं बार कर जाएगी. वो आइंस्टाइन ने बोला था ना, that the most foolish thing is to use that same thing again and hope that it works when it has failed so many other times. And Sanjay sir, that is why I said right at the beginning कि अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मेरी जो पॉलिसी होती वो है कि अब इन्फिल्ट्रेशन करते रहो, दैट्स अ कॉस्टलेस एक्सरसाइज, बाकी काम काफिर अपने आप ही कर रहे हैं हमारा. हाँ, बिल्कुल किया ना उन्होंने. 1947 में हम ही ने तो किया था. जिन्ना ने तो बाद में बोला था, we could never have had Pakistan had there not been people like Nehru and Gandhi. Next. Jayant, objective should be to connect Afghanistan and UP. Arre? Up. I think he means up, sir. Afghanistan and up. Okay. Afghanistan and up. Yes, I think that can be a strategic objective. But then what will you do with the baggage that comes along with it? और ये जो अफगानिस्तान वाला है कि आप गिलगित बाल्तिस्तान ले लीजिए और आपको ऑटोमेटिक पैसेज मिल जाएगा अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का. वो अगर आप ज्योग्राफी देखें वहाँ की ध्यान से तो आप पाएंगे कि वो फीजिबल नहीं है. None of the valleys connect directly to Afghanistan. They are ringed by a 6,000 meter ridge. One. और पहले भी जब जाते थे तो that particular pass, what is its name? I'm forgetting right now. That goes through what is present Khyber Pakhtunkhwa. It doesn't go through the Gilgit-Baltistan territory. Khyber Pass? No, not Khyber Pass. I'll tell you the name of the pass. Because the one that connects Wakhan. Oh, Wakhan corridor. Oh, achha. That one connects Wakhan. Wakhan corridor is very close to Gilgit, actually. But these other passes into Afghanistan further. There is no pass that connects. There's no pass that connects from Gilgit. No, there's no pass. Gilgit. There's no pass that connects from Gilgit. There is no pass that connects from Gilgit. There is no pass that connects from Gilgit. There is no pass that connects from Gilgit.
Yeah, There's there's nothing, no and pass. it connects only through the Khyber Pakhtunkhwa, as you said, absolutely. Khyber Those are the Pakhtunkhwa. places. Yeah, I'm yeah. forgetting the name of the pass right now. That is the only pass that has a connection. Anyway, next, let's go next. Humpty, respected sir, in current world scenario, which country has leverage over Kashmir issue? What will be the consequences after India taking POK in international relations? Good question. Only country that has leverage in Kashmir issue is the Republic of India. Let's get that into our heads. We are the only ones who have leverage in the Kashmir issue. It is entirely in our hands. Nobody else cares enough to do anything significant to us to stop us from doing what we want to do. And also says, what will be the consequences after India takes over POK? Nobody will go to war with you. NATO is not going to attack you for the simple reason that they don't have any contiguous borders. Sanctions हो सकती हैं, that you have to be prepared for. Sanctions are The good actually. हाँ, yeah, exactly. वो तो हमने last time भी बोला था. only the population we have to handle. That's all. Because as somebody said, Congress will get more voters. So that is the only thing. So No, that solution is there, which I have given in my yeah, book. That yeah, says that keep Kashmir as union territory Yeah. forever, and make Jammu as a separate state. yeah. That's the solution. But we get it's too romantic about things, especially about democracy. I mean, democracy cannot be greater than the unity and integrity of the country. It cannot be greater than India. That's something that we fail to understand and fail to realize. Can I just make a very quick point, sir? People should Yes, please. realize, आप just go back 7-8 months. Okay. October last year हमारे कितने migrant laborers मारे गए कश्मीर में? याद है लोगों को? Almost I think 9 were killed, then lots of Kashmiri Pandits were killed. Yes. Yeah. And Kashmiri Pandits, more have been killed after 370 than before. So the only way to solve this is you have to do the demographic change, and as to do that demographic change, it has to be union territory. Sanjay ji is absolutely right, and you have to make a firewall between Jammu and Kashmir. So Kashmir, anyway, we have lost so much. Why should we lose Jammu? And all our Dogra is from there. Absolutely. Absolutely. Can't agree more with you. Okay, next. Priyank Bharadwaj again. Do you think Indian government is really serious about taking POK? I don't think they have a plan even. India rarely gravitates taking back POK There is globally. no plan in handling Pakistan. There's no plan in informing Indians about what Pakistan is. If you look at the education, the fact that here we have a country of 220 million people, they hate India. It's an Islamic extremist country. And here we have the shades of the same Islamic extremism in our country, and we are talking secularism, same genes, whatever the same this thing. I mean, this is completely wrong. We are heading in the wrong. We are committing suicide. We're committing suicide. We've got a constitution. Okay, whether you like it or not, constitutional law is to work in India, not Sharia. I think we have to be very, very clear about this. How can you accept this half pale green Sharia in our country in some areas? We have to impose our laws in our country and talk to people about what's going on. 220 million people, what are you going to do with them? You have to take this very seriously. We can't just think this is some kind of light joke that, this is a neighborly country, they are our friends, they're going to be good to us. Oh, they're so good in cricket. Sorry for that. Yeah. Good one. Next. Garga, when do you see Kashmir stand in next 10 to 15 years time? Okay, I'll start. It all depends. Everything is dependent on what we do.
If we do the delimitation based on the 2011 census, which had increased the population of Kashmir by 14 lakhs, and every single one of them was a voter. The population increased by 25%, and every single one who has been born there is a voter. Let me tell you that people in Kashmir, because of lack of money, sometimes only one person in the family gets married. So you have to see first look at delimitation, ensure that the right delimitation happens. Number two, don't do elections there. Implement those things which are there in Unbreaking India and which have been discussed many times. Ensure that land jihad is taken care of. I mean, why when the government of when JK High Court has given a judgment against land jihad, and your own Smriti Irani has called that a surgical strike against land jihad, that judgment, few weeks later you filed a petition against that own judgment. Review petition, yes, sir. What is happening? I don't know. So, and elections, as you said, you don't do those elections. So if you don't do all of that and you ensure that the demography changes, you ensure that Kashmir is not given undue importance, and Jammu has also gone up, and all of those things that have been discussed here many times, then it's fine. If you don't do that, then ultimately at some stage, a government, so-called democratic government of Jammu and Kashmir will say that we exceed. And you can stop that accession. Of course, you can stop it. But by that time, even Bengal may have exceeded. You might have had small pockets somewhere else, and also in India. Your problems will multiply. You're seeing what happened on Ram Navami. Virat, respected Shiv sir. This question is to Dr. Shiv. The single agenda of Pakistan is to destroy the India in general and Hindus in particular. Still, we have allowed them to survive for almost 75 years. Why doesn't India just launch a special military operation to de-Islamify Pakistan? Why should we do that? Why not just destroy them? Doctor, since this is a question to you, I consider it to be a loaded question. No, how I'd love that. But the thing is, we need to be open about what is going on. What is the problem? The problem is Islam, and Islam hates kafirs. There are 220 million there, and we have several hundred million here, many of whom agree 100% with what is said about kafirs in Pakistan. We need to be open about this. We need to discuss these things openly. We need to openly say what is happening in Pakistan. We need to understand how they hate us. Okay? And as long as we hide these things, we won't even have the political will to attack them. We don't understand the danger there is. We are hiding our heads like ostriches. It's, you can't. Yeah, military operation is nice. How nice it would be if we could do that. But there's 220 million people. So, it's not something that can be done like that. We're going to do it. You cannot de-Islamify through a military operation. That is, yes, you cannot de-Islam, but you can do only through a narrative. Yeah, but we need to first understand what Islam is doing, what Islam says about Hindus. It's very clear. It's very crystal clear. You need to understand that. There's no point in having and as who was it? It was Anand Ranganathan, I think, who pointed out that technically the good Muslims are the Taliban and ISIS, and the others who are moderates are bad Muslims. They're bad Muslims because they're the ones. He only picks up things from me, and you listen to him, right. But you don't listen to me. No, I do listen to you. I just happen to read his tweet. I don't listen to him much. But I just happened to read his tweet. No, I have said it myself. I've said this for a long time. I just used his name. For a very long time, I've said that. I'm very sorry, but now we have to go much faster because there are so many questions that if we go at this pace, we'll take another hour. So I request both of you, gentlemen, to please make quick and sharp points. Vinod Bhatia, anything for Motherland? Patram Pushpam. Thank you, Ji. Nishikant Reddy, our officers in the security forces not avid readers. Why it took scholars like Sanjay Dixit to bring your notice to the root cause philosophy? I will say that they are readers, but they read their technical stuff, the manuals and things on operational art and all. And after this so-called scholar warrior stuff and Operation Sadbhavna and too much of counterinsurgency operations, they have started seeing themselves as diplomats. And
And I cannot resist saying that the same question must be also asked to the RSS here. That is their job to know all this. So why don't they read all this? And why does Sanjay Dixit ji have to explain the 8 misconceptions of RSS to them? And I'll just add to this that this is not just confined to the military officers. Look at the bureaucrats. My folks, they are worse. Till date, they have not found a reason why communal disturbances take place. I found the reason right in the first 5 months of my first posting as a subdivisional officer. Saraswat Sadhak, unless the demographics are addressed on our side of Kashmir, will it not be counterproductive to think about POK? Exactly what Akshay ji has said. So I think I'll just say yes on behalf of Akshay and move on. Saurabh Jan, what will world do in the meanwhile? We attack Pakistan, basically USA, Arab world, China, and Europe. Okay, China may support them by doing some operations and keeping our forces tied up. As I said, that we have 22 divisions or 20 divisions only for Pakistan. Okay, so we have forces for Pakistan in situ for Pakistan, and then we have forces for China in situ for that. So we hold there and we carry out the operation here. Your problem is going to come in a little bit in the Air Force. They are going to be a little stretched, but I think they can manage. USA can do nothing apart from making a big noise. They can't do anything. They are not able to do anything in Ukraine. What will they do here? Okay. They did so well in Afghanistan. They did so well in Afghanistan. Wonderful. Next, Girish Kumar. What is the treatment of Pakistan inside India? Sanjay sir. I have explained it many times. And I think today is not the topic. We may do another edition on that. Next. AA, sirs, the more Pakistan talks about Kashmir, it is beneficial to India. If you look at the broader perspective, I believe it is in India's interest that Pak does not work on their economy and talk about trivial issues. What do you have to say? Pakistan talks about Kashmir because they have to keep their population on side and say that we are doing something about Kashmir. They will keep doing what they are doing, is sending infiltration. And yes, it's good for us to for the economy to go down, which is why we should never resume trade with them. Quite right. Next. what about peaceful of our own country? Aman Srivastava. Pakistan is a state of mind and an idea how to deal with them in future. Fortify yourself intellectually, understand them first of all, get out of that secular mindset completely, especially and get the leaders out of that. And Just a short form. the solution is very simple, and it has been demonstrated by two chief ministers. You know them both. Just a short comment. We talk so much about Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. What we have to understand what is the truth. Well, I think Sanjay ji has been doing a lot of work in what is the truth. Understand the truth of what is going on. You That's know what it is. So you've got Unbreaking India and Bharat Akhandan. Send that to people and get people to read the Fatwa-e-Alamgiri, which has been translated by Jaipur Dialogues. Do that, make it mainstream. Fatwa Alamgiri is also more than 10,000 have been downloaded. So, but I think it's not enough. At least a few lakh people must have that. Yeah. And since it is available for free, why wait? If nothing else, just download the Kitabul Hijad, the Kitabul Jihad, that is called Kitabul Sar, and the Kitabul Hudud. Just two of them. It doesn't take long to read them. Of course, the language is a bit difficult, but I'm trying to simplify that as well. Shashank Shukla, thank you. Abhiyan Singh, how can we defang Pakistan army? Meaning, how can we take their nuclear weapons away? You can't take their nuclear weapons away.
And I've discussed this in the previous talk that there's a difference between tactical and strategic nukes. And I don't think nuclear weapons will be used. So we shouldn't worry too much about that. Right. Next. Can we also applaud PM Modi ji on giving the right man the right job? Take, for example, S. Jayashankar ji, NSA Ajit Doval sir, and many more. What is your take on it? I really enjoyed S. Jayashankar sir's response to American Lady. I'll take this question. Yes, S. Jayashankar is pretty good. Uh, as far as Ajit Doval is concerned, he's created lot more problems in Jammu and Kashmir than he has solved. That is the unfortunate truth. And he's the man who has created a handicap for Amit Shah. And if you read my book, I mentioned that very clearly, that there was a tug of war between two clubs. One was led by the intelligence lobby, and you can guess who would be leading the intelligence lobby, which did not want 370 to go. The other one was led by Amit Shah. Amit Shah finally had his way, but afterwards, Amit Shah has been shortchanged, and whatever rollback you are watching is Ajit Doval's doing. Secret revealed. Mohit Gujar, sir, instigating POK will do no good. Islam as an ideology needs to be defeated starting from India. I think we can all agree to this. Prashant Bisht, with POJK and Azad Kashmir annexed by India, won't the UN conditions for plebiscite kick in? It will prove to be another albatross around the neck. That UN, What is UN? What UN is is a UN? joke. What What is is UN? What is it? Well, I mean, I tell you, we have got us, all of us. Sorry, no disrespect, man. But as Indians, we are taught to talk like slaves. That we must take permission from America. What will America do? What will UN do? You know, national strength means doing things on our own for ourselves. And forget about this UN and all. What is UN? What is UN doing in Ukraine? Next, Akshay sir. This is a question from Chaitanya YSK. Akshay sir, just like the Portuguese had the blue water policy, gunning down any ship without their approval, can Indian Navy try something like that? Sometimes as a way of warning and hitting their ports. Yeah, I mean, from a from a military capability perspective, absolutely. But they will come. We will fall foul of some maritime laws and all of that, which the government of India should handle for them. If the government of Right. India handles all those issues and gives the Navy an operational direction to do this, the Navy will do it. We have Jayant. We have an Indian air base in Tajikistan, and we can use Taliban, who also want control over Wakhan corridor. I Well, they think already have. using other See, I'm sorry to say, too many times we hear about people. We should take Israelis, get Israelis to do that. We should do this. We should do that. Ultimately, whatever we do, we have to do ourselves, not depend on anybody else. Taliban is not No, going to. Taliban Nothing already comes have free. control of Wakhan corridor. They have control over Yes. Afghanistan, and Wakhan is very much part of Badakhshan, which is Afghanistan. So I don't know what do you mean by Taliban who also want control over Wakhan. Jay, thank you. Kamakshi Bhala. Why doesn't the government understand that Kashmiri Muslims, natives, hate India and no amount of appeasement will work? That's what we say all the time. Businessmen from OIC countries in Kashmir, OIC raised Islamophobia and Kashmir. Ajit Doval. Technically, all good Muslims will hate all kafirs. Have You do the to. They math. have to. Yes. They If you have are a to. good Muslim, if you have to follow the books, you have to hate all non-Muslims. Absolutely. So you can do the math yourself. So there's so many. The I think I would advise everybody don't need to go through the entire theology, but the last surah, that is the ninth surah At-Tawbah,
because according to the theological principles, it overrides everything else that comes before it. So just read that. That's all. I think it's only about 130 verses or something. Just read that. I'll That should just pass educate everybody. I'll just pass a short comment. This is my opinion. I feel that among Indians, Hindus read the text much more. A lot of Muslims not educated enough to read the text, but they listen to the mullahs. And what the mullahs are doing is something that we need to bring under control. This is what I feel. Yes, yes. Their power of taqleed, that needs to be nipped in the bud. Anyway, I think that's a topic for another day. And I think it was nicely raised what to do with Pakistan within India. We can discuss that sometime. So, with that, we come to the end of this session. Thank you very much, all the viewers, and thank you, Akshay, and thank you, Dr. Shiv. We had a wonderful session, a record number of questions, almost 30 questions we dealt with, and there is one more coming up, I think. Let me take that as well before we finish. Nishikant Reddy. Akshay sir, definitely it's RSS job, but is it not security agencies' duty to have a research wing to analyze any anti-national philosophies which has and can damage India and cost millions of lives? The role and the mandate of the Indian Army is to defend India's borders against external aggression and to act in support of civil authority. So therefore, they are this is not really their role, but they should know it, but they don't. As far as the police is concerned, yes, I think they should definitely know it. Just one short comment. Just yesterday, there was an article by an Indian Air Force officer who's in a think tank in Australia, who pointed out that he was talking about the Indian Air Force, but it applies to the Army as well, that intellectualism is looked down upon. Okay, and that anybody who shows an intellectual bent in the force is sort of sidelined, and it's the more sort of gung-ho type of people who rise. And this is wrong, and we need to look at the intellectualism part as well. If it applies to the Air Force, I think it applies to the Army as well. Yes, they need to change that. Okay, so I think with that short comment, we ring the curtain. Thank you very much. Thank you, Akshay, and thank you, Dr. Shiv, and thank you, everyone. Jai Hind, Vande Mataram. Jai Hind, Vande Mataram. Phone in my hand, so I can't do namaste. I will drop the